Everyone, our chief guest and guest of honor of today's ceremony has arrived in this room. I request all the participants and students to maintain the decorum. Thank you. I request our distinguished guests to kindly come. किशोर साहब यहाँ पे आने दो हमको एक बार नीचे उतरने दो फिर एक ही बार में सबको ऊपर ले लेना हाँ I request all the participants and students to give a standing ovation as our chairman, MAIMS, has arrived in the evening. And I also request our distinguished guests, chief guest of the day, Honorable Mr. J.K. Maheshwari, and our guest of honor, Honorable Mr. Justice Satish Chandra Sharma ji, to please come on the dais so that we can commence with the program. All the best. Jai Mata Di. Yes, sir. So we shall all thank you. Yes, sir. Good luck. नमस्कार, a very good evening to one and all present here. आप सभी को नव संवत्सर 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं. On behalf of Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, Department of Law, I, Sunidhi Gupta, Assistant Professor, MAIMS, and I, Kriti Johari, Assistant Professor, MAIMS, take pleasure in welcoming you all to the inauguration ceremony of MAIMS 3rd Justice J.S Verma Memorial National ADRCC Competition and Navita's National Law Fest 2023. We wholeheartedly welcome our distinguished dignitaries, faculty members, students on this mega event of the year. We all have been eagerly waiting for this momentous occasion, and we hope it turns out as a beautiful memory worth cherishing forever. As organizers, we are grateful for having received this distinguished opportunity to pay homage to the memory of our beloved Justice J.S. Verma, who was a great judge, a notable jurist, a true visionary, and an institution in himself. Contributions of Justice Verma, both on and off the bench, continue to act as a philosophical stimulus for individual liberty, group rights, secularism, equality, and judicial ethics. His whole life was founded on the most revered virtue, and that was judicial innovation. As of today, with huge pendency of legal disputes, alternative dispute resolution emerges as the most reliable judicial innovation where lawyers, judicial officers, academicians strive to give away their adversarial robes and adorn a more collaborative and facilitative role to resolve disputes. We are indeed grateful to host this competition under the banner of Honorable Justice Verma.
सरस्वती महाविद्या, वीणा पुस्तकधारिणी, हंस वाहिनी, samraharun vidya buddhi dadatu me. Before proceeding further in this wonderful evening, we seek the gracious blessings of Goddess Ma Saraswati, who is the epitome of intelligence, consciousness, cosmic knowledge, creativity, education, enlightenment, power, and divinity. I therefore invite all our esteemed dignitaries for the lighting of lamp ceremony as we remember and pray to Goddess Saraswati through Saraswati Vandana. Please. Ms. J.S Verma is also requested to join us for the light lighting ceremony. The spiritual vibe that has been set has created a stance of trance on this divine evening. लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी सांस्कृतिक समिति से आग्रह करते हैं कि वे शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक प्रदर्शन के माध्यम से हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। Disclaimer. This play is a work of fiction based on true events. This play does not claim any factual accuracy. This play has been written by taking creative liberties of the events for dramatic expressions. The makers have held the respect of spirit of Shaheed Bhagat Singh in the highest light while creating this play. Various metaphors and pieces of literature used in this play are inspired from existing pieces of art on Shaheed Bhagat Singh's life and his message to the world. We salute the great sacrifice of these freedom fighters who laid their lives in the struggle for independence. नमस्कार। मेम्स कल्चरल सोसाइटी आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत करता है एक छोटा सा नाटक जिसका शीर्षक है भगत सिंह आज कहाँ। चलिए भूतकाल और वर्तमान को एक मंच पर उतार कर देखें। एक तरफ युवा वर्ग के विचार और दूसरी तरफ भगत सिंह की देशभक्त विचारधारा का प्रवाह, और खोज करें कि आज भगत सिंह कहाँ है, कितना है युवाओं के बीच, हमारे बीच। भगत सिंह, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूँ कि कोर्ट ने तुम्हें, सुखदेव और राजगुरु को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई है और अब किसी भी दिन इस हुक्म की तामील की जा सकती है। ठीक है जेलर साहब, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। भगत,
एक सवाल पूछूं? क्या तुम्हें कोई गम नहीं? किस बात का गम जेलर साहब? एक क्रांतिकारी के लिए तो यह जश्न की बात है। मेरे दूसरे साथी भी इस खबर को सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन भगत, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों को तो सॉन्डर्स मर्डर केस में फांसी की सजा हुई है। क्या तुम इस सजा से संतुष्ट हो? जेलर साहब, मुझे इस कोर्ट के फैसले से कोई शिकायत नहीं है। इस कोर्ट के फैसले के ऊपर भी एक अदालत है, जिसके फैसले के बाद ना कोई अपील ना सुनवाई है। अरे इसको देखना कैसे मायूस बैठा है। अरे क्या हो गया भाई, इतना परेशान क्यों है? इसको देखो, फालतू में करियर की इतनी टेंशन लेके बैठा हुआ है। फालतू की टेंशन नहीं है यार, हमारा लॉ का लास्ट ईयर है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब हो जाएगा भाई? लास्ट ईयर है, प्लेसमेंट ढूंढनी है, कनेक्शन बनाने हैं, और तुम लोगों को तो पता है ना कोर्ट में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। हाँ गाइस, बात तो ये सही कह रहा है, कोर्ट में धक्के तो बहुत खाने पड़ते हैं। पर तन्मय का सही है, इसके पापा तो बहुत बड़े वकील हैं, इसको क्या ही दिक्कत होगी। भगत, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कोर्ट से सिफारिश करवाकर अपनी इस फांसी की सजा को किसी कम सजा में तब्दील करवा दूं? और तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 23 साल है। अगर तुम इस उम्र में फांसी हो गई तो तुम क्या हासिल कर पाओगे? लेकिन अगर तुम जिंदा रहो तो कितना कुछ हासिल कर पाओगे अपने देश के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए। जेलर साहब, मेरी तो यह दिली इच्छा है कि मैं हंसते हंसते अपने साथियों के साथ फांसी के फंदे चढ़ जाऊं। सिफारिश और दया जैसे ख्याल तो मैंने उसी दिन त्याग दिए थे जिस दिन आजादी की जंग में अपना पहला कदम रखा था। अरे भाई, तुम फिर शुरू हो गए। यार तन्मय, बात तो खुशी सही कह रही है यार। अरे तू अपने पापा को बोल के हमारी सिफारिश लगवा के किसी टियर 1 लॉ फर्म में प्लेसमेंट करा दे भाई, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ यार, तू कुछ तो कर, तुझे तो वैसे भी पता है सिफारिश के बिना आजकल कहाँ ही कुछ होता है। हाँ तन्मय, तुम्हें तो पता ही है ना, थोड़ा ऊपर जाने के लिए मेरिट की जरूरत पड़ती है और बहुत ऊपर जाने के लिए सिफारिश की। मैं चाहता हूं मेरी मौत इस देश के युवाओं के लिए एक मिसाल बन सके, वो सब भी आजादी की जंग में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ तो जिस आजाद भारत का सपना हमने देखा है वो एक दिन जरूर पूरा होगा। जेलर साहब, आजादी मेरी दुल्हन है, मेरा प्यार है। अरे भाई, ये सब बातें छोड़ो। अंश, तू बता, तेरी वो स्पेशल वन कैसी है? सब बढ़िया। अरे यार, अब तुम लोगों से क्या छुपाना यार, मुझे लगता है मुझे ना प्यार हो गया, इस बार सच्चे वाला हुआ है बाय गॉड। तू रहने दे भाई, तेरा हमेशा का है, तुझसे नहीं होगा अब। हाँ अंश भाई, तुमने ना हमारे ग्रुप की बहुत बार नाक कटवा दी है, हम इस चीज से आउट है। भाई ऐसा है, सुन, तेरे चक्कर में हमारे ग्रुप ने बहुत डांट खाई है, बहुत गालियां सुनी है। अब तू थम जा, तू नहीं संभलेगा हमसे यार, तेरे को हर दूसरे हफ्ते प्यार हो जाता है। भगत, जिन युवाओं को तुम आजादी दिलवाने की कोशिश कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ने पर तुम उन्हें भी हिंसा की मार्ग पर चलने की हिदायत दोगे? जेलर साहब, मैं उन लोगों में से हूं जो कलम की ताकत को तलवार की ताकत से बड़ा और प्रभावशाली मानते हैं। मैंने कितने लेटर लिखे इस सरकार को, सिस्टम को अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वह बीते वक्त की बात है। भाई तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो यार? तुम एक बार उस तक मेरे जज्बात, मेरे लेटर्स पहुंचा दो, फिर देखो वो कैसे मेरे प्यार में गिरती है। और नहीं गिरी ना, जो बोलोगे वो करूंगा, मैं ये ग्रुप छोड़ दूंगा। और बताओ। तू ना रहने दे, तुझे हर दूसरे हफ्ते प्यार हो जाता है, इस बार का भी यही है। आप हिंसा की बात करते हैं, हिंसा क्या है बताएं जेलर साहब? जब कोई ताकतवर व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, उस पर शोषण करता है, उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, उसे हिंसा नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। जिन तरीकों से तुम आज़ादी हासिल करना चाहते हो, क्या देश के युवा और आवाम उन प्रयासों को सही से समझ पाएंगे? जेलर साहब, हिंसा के बारे में मैं पहले भी विचार कर चुका हूं। मैं जो बात कहता हूं बेबाक और साफ तरीके से कहता हूं, बिना किसी बनावट और दिखावे के। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, फिल्टर। यार तुम लोगों को पता है मेरी ना बातें घुमाने की आदत नहीं है, मैं जो बात कहता हूँ ना साफ साफ कहता हूँ। तुम मुझ पे ना फालतू में शक मत किया करो। क्या छोटी छोटी बातों जो फालतू में शक करते रहते हो यार? तू और साफ बात कहता है तूने अपनी इंस्टा पे एक डीपी देखी है, बिना फिल्टर के कोई फोटो नहीं है, आया बड़ा साफ बात करता है। भाई सब बातें छोड़ो, इंस्टाग्राम से मेरे को याद आया, मैंने ना एक पोस्टर देखा था, हमारे कॉलेज में भगत सिंह का बहुत बढ़िया प्ले होने वाला है, देखने चले क्या? अच्छा, कहाँ पे? अपने मेन ऑडिटोरियम में। कितने बजे? अभी टाइम क्या हो रहा है? 1:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, चलते हैं।
हाँ चलते हैं ना यार, वैसे भी क्लासेस तो ओवर हो ही गई हैं और घर पे भी ऐसा कुछ काम है नहीं, चलते हैं। नहीं यार, प्ले नहीं देखना, तुम लोग बोर कर दोगे मुझे। कहीं क्लबिंग चलते हैं, पिज्जा खाते हैं। इतनी भारी भरकम देशभक्ति मेरे समझ में नहीं आएगी। वेरी ओल्ड स्कूल। अरे यार, क्लब तो जाते ही रहते हैं, चल ना, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। चलो चलो चलो। आजादी हमारा मकसद नहीं। ये क्या कह रहे हो भगत सिंह? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथों लग जाए। क्या यही आजादी है? क्या इससे आम इंसानों की जिंदगी में कोई बदलाव आ पाएगा? क्या किसानों के हालात बदलेंगे? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले। ऐसा वतन जो इंसान पर जुल्म बर्दाश्त ना करे। इस बात को अगर हम आज से नहीं समझेंगे और इस मसले पर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क तो होगा पर एक आदर्श समाज की रचना नहीं कर पाएंगे। हम सबको मिलकर बनाना है एक आदर्श वतन। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद करना है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी। मोमबत्तियां बुझ गईं, चिराग तले अंधेरा छाया था। फांसी के फंदे पर जब तीनों वीरों को झुलाया था, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के मन को कुछ और न भाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। तीनों के साथ आज एक बड़ा सा काफिला था। भारतवर्ष में लगा जैसे मेला कोई रंगीला था। लेकर जन्म इस पावन धरा पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटा। मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या आप उन शहीदों की फांसी से परेशान हैं? उन्होंने सिर्फ वही किया जो उनका राष्ट्रीय धर्म कहता था और आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है पिताजी? मुझे हमेशा लगता था इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो चुपचाप मौत का दामन थाम लेते हैं और दूसरे जो रोते चिल्लाते मौत की तरफ बढ़ते हैं। पर उस दिन मैं तीसरे किस्म के इंसानों से मिला। कई बार आज भी मैं उन्हें अपने सपनों में देखता हूँ, बेखौफ अपने आखिरी कदम बढ़ाते हुए। टकमगाना तो उनके कदमों ने सीखा ही नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा याद है वो आंखें, अंदर तक चीरती हुई, निडर, साफ, स्थिर। वो कहते थे हमारे बाद और भी आएंगे और अभी तो ये बस शुरुआत है। अभी तो ये बस शुरुआत है। अभी तो ये बस शुरुआत है। सही मायने में इस प्रदर्शन के लिए हमारी ये तालियों की गड़गड़ाहट ही हमारे वीरों को श्रद्धांजलि देने का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। Ladies and gentlemen, before we move further in the program, we take a moment to acknowledge and extend a heartfelt gratitude towards our esteemed dignitaries who have graced our gathering with their benign presence. We request Founder and Chief Advisor MAIMS and Chancellor Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh, Dr. Nand Kishore Garg ji, to present a sapling, memento and shawl as token of our respect to our chief guest, Honorable Mr. Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Judge, Supreme Court of India. A huge round of applause, please.
We now request Shri Vineet Kumar Lohia, Chairman, MAIMS, to present a sapling, memento and shawl as a token of our respect to our esteemed guest of honor, Honorable Mr. Justice Satish Chandra Sharma, Chief Justice, Delhi High Court. I now request Shri T.R. Garg, General Secretary, MAIMS, to present a sapling and a memento to Ms. Shubhra Verma, daughter of Justice J.S. Verma, who has been a source of constant support to us in realizing this event. I now request Shri Jagdish Mittalji, Vice Chairman, MAIMS, to felicitate Shri Anish Gupta ji, Additional Commissioner, Department of Revenue, Ministry of Finance. Is there? I also extend a warm welcome to Shri Mohan Garg, Joint General Secretary, MAIMS, Shri Jitendra Bhatia, Advocate on Record, Shri Shashank Sudhi, Advocate, Supreme Court and Delhi High Court, Shri Akhil Mittalji, Standing Counsel, MCD, DDA and Revenue Department. Moving ahead, I would like to invite our director, MAIMS Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, to deliver her introductory remarks before this August gathering. Professor Dhingra joined MAIMS in the year 2020 and carries an experience of teaching in law for almost 2 decades. She first joined as Principal, Department of Law, MAIMS, but owing to her commendable contributions to the department and her vision of taking the institute to new heights, she now serves as the officiating director of our institution, heading 5 departments under her able guidance and leadership since July 2022. We welcome you, ma'am. Thank you, Sunidhi. A very good evening to Honorable Mr. Justice Jatendra Kumar Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Satish Chandra Sharma, Chief Justice, Delhi High Court, Shri Nand Kishore Garg ji, Founder Chair and Chancellor Baddi, Shri Vineet Kumar Lohia ji, Chairman MAIMS, Shri T.R. Garg ji, Joint General Secretary MAIMS, Mohan sir, Rajneesh sir, and other revered trustee members. Good evening to everybody. Knowledge is supreme power, and the personalities who are the reservoir of knowledge deserves a salute from the bottom of our heart. Your Lordship, your presence has already filled the heart and mind with a great sense of pride.
as it is an indication that we are moving in the right direction in providing the best possible knowledge to our students and giving them the platform to show their talent and hone their skills. Your Lordship, it is a matter of pride that we are hosting 127 universities across India and 545 participants. Your Lordship, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies are having 5 departments and providing education in the field of law, management, commerce, economics, and journalism. And Department of Law is just 5-year-old. Your Lordship, we started this flagship event of Justice J.S. Verma ADRCC Client Counseling Competition in the year of 2021 with the support of NALSA and Ms. Shubhra Verma, who is the honest and very, very supportive daughter of Justice J.S. Verma. Honorable Mr. Justice J.S. Verma was an institution in himself. He was a great jurist and having great understanding not only about law, but also the social and economic environment of India. Justice J.S. Verma was an ardent protector of environment, a great champion of social justice and secularism. Sir has done a lot to uphold judicial accountability and personal liberty. Sir is a strong believer of judicial innovation. And I feel that this is a judicial innovation to reduce the pendency, that is mediation, arbitration, client counseling. So sir was a strong believer that judiciary should innovate to reduce the pendency of matters. Sir has been the inspiration of all of us and will remain the inspiration of the future generations. With this, I request my team to show the journey of MAIMS and Department of Law in 5 minutes. Thank you so much. Maharaja Agrasen Institute of Management Studies has been imparting education with the vision to empower the youth, to bring positive change and in becoming capable of taking balanced decisions, keeping global interest in mind in the true spirit of Vasudev Kutumbakam. Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, located in Rohini, established in the year 2003 under the umbrella of Maharaja Agrasen Technical Education Society. The Department of Law was established in 2017 with the introduction of 5-year integrated BA LLB course. Established as a unit of the Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, the department aims to provide quality education with a professional approach to the budding legal professionals.
students, you are the best source available today. I've always been saying that somehow it hasn't appealed to my reasoning or my logic. Take, for instance, medical courses. After completing medical course from any university college, the students are expected to do some internship. They give it back to the society. Why not we law students? Why not give it back to the society, something? Yeah, it's a great pleasure and honor for me, particularly in participating in this program. Today's program is organized by Maharaja, Agrasen institutions in collaboration with NALSA and Foundation for this event. मुझे आशा है कि आप सब लोग इसी भावना से, इसी दृष्टि से यहाँ पर इंस्टीट्यूशन आए हैं और इंस्टीट्यूशन के जो ट्रस्टी लोग हैं उनका भी विचार कि किस तरीके से समर्पित भाव से उन्होंने विद्यालय बनाया, महाविद्यालय बनाया, टेक्निकल एजुकेशन बनाया, हॉस्पिटल बनाए, धर्मशाला बनाई। उन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया, देश के लिए समर्पित किया। It's humble to be part of this gathering. I am happy to know that Maharaja Agrasen Institute of Management Studies is organizing a competition on a very unique subject, that is ADR and youth client counseling. Aspects that I say, whatever meetings are already made up their mind. So I'm expecting some youngster like you to research. Keep these experiences with you, and it will also help you not only in developing skills, but especially developing wisdom that will be with you forever. Thank you very much. We inspire dreams, galvanize actions, and define the vision for tomorrow. न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम. Education is the best wealth of all. No one can steal it. No state can snatch it. It cannot be divided among brothers, and it's not heavy to carry. As one consumes or spends, it increases. As one shares, it expands. In the same manner, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, continuing the legacy of the Justice J.S. Verma Memorial National ADRCC competition, induces the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam. I, Anshika Jain, and I, Mimamsa Girdhar, the program heads of the 3rd Justice J.S. Verma Memorial National ADRCC competition and Navitas National Law Fest 2023, stand before all the esteemed dignitaries and are more than just glad to host 545 young minds pan-India. This competition gives us an opportunity to take stock of our achievements and to rededicate ourselves to facing new challenges that lie ahead, whereby we let the black coat stars rule the heat of the room and let the splash of words act as cold water. On this note, we would like to wish all the participants best of luck. But do remember, all the qualities, efficiency is the best of all. Wealth, knowledge is the best of all profits. Health is the best of all the happiness. Being satisfied is the best. So, let's begin with the real-world experience of law and justice. Thank you. थैंक यू मीमांसा एंड अंशिका. अब मैं महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष व प्रमुख सलाहकार एवं कुलाधिपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी.
आदरणीय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी एक बहुयामी व्यक्तित्व के धनी, मूर्धन्य विचारक, सुधी समाज सेवी एवं कर्मठ शिक्षाविद हैं। माननीय, सदैव निष्काम भाव से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते रहना ही आपके व्यक्तित्व की प्रतिभा का द्योतक है। आप सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आपके कुशल नेतृत्व और संरक्षण में हमारा संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। माननीय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से सभा को अनुग्रहित करें। नमस्कार। नव विक्रम संवत्सर 2080 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 3-4 कार्यक्रम इसके साथ ही जुड़ गए, जहां जस्टिस J.S वर्मा जी की पुण्य स्मृति को हम स्मरण कर रहे हैं, लगातार तीसरे वर्ष कर रहे हैं, और उसमें उपस्थित हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस महेश्वरी जी, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। मैं थोड़ा सा पहले महाराजा अग्रसेन कौन थे आज के इस कार्यक्रम के विषय में भी बताना अपना फर्ज समझता हूँ, कि महाराजा अग्रसेन द्वापर युग में पांडवों की ओर से युद्ध में, महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने वाले ऐसे महामानव थे, जो भगवान राम के वंशज होते हुए भी क्षत्रिय वर्ण से वैश्य वर्ण में आए, क्योंकि उनको यज्ञ करते हुए आत्मबोध हुआ कि हिंसा, पशु हिंसा रुकनी चाहिए, और उसके कारण से वो एक नया राज्य सरस्वती नदी के किनारे, आज के अग्रवा के नाम से जो स्थान जाना जाता है, हिसार जिले में 20 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 200 किलोमीटर, 5000 साल से लगातार जिनके हम अपना पूर्वज मानते हों, और उनके बारे में समाज को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। कारण था बीच के 1000-1500 साल का वो कालखंड जिसमें किसी को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हुई, और जो कुछ मैकाले जी की इच्छा थी या उनके फॉलोअर की इच्छा थी, उतना ही भारत का इतिहास, उतना ही भारत की संस्कृति, वैसी ही न्याय व्यवस्था और वैसा ही डेमोक्रेसी स्थापित करने में वो लोग सफल रहे। और हम आज 75 साल के बाद भी इस अमृत काल में उस ढांचे को हिला तो पाए हैं, शायद अभी हटा नहीं पाए। जो संस्कृति 197 करोड़ 29,49,123 साल पुरानी, मतलब सृष्टि की रचना से जिसकी काल गणना हो, उसको कुछ लोग सिखाने आए थे और हमें बताया था गडरिये हैं, भेड़ चराते हैं, और हमें कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि हम वो सर्टिफाइड पढ़े लिखे नहीं थे, वो डिग्रीधारी नहीं थे उनकी नज़र में। जबकि जिस समय वो आए, उनकी अपनी रिपोर्ट में भी 3 लाख गाँवों में हमारे गुरुकुल या पढ़ाने की व्यवस्था थी। उस पर ज़्यादा ना जाते हुए, उसके बाद आज 2080 है, इसको भी विशेष लोग नहीं जानते। विक्रमादित्य कौन थे, उसके बारे में भी भारत के इतिहास में बहुत स्पष्टता से नहीं बताया गया। उनके भी 9 रत्न थे, उनके बारे में पूछो तो अधिकांश को नहीं पता। अकबर के 9 रत्न का पता है, परंतु 2080 साल पूर्व जिसके नाम से संवत शुरू हुआ, उसके बारे में नहीं मालूम। मैं कल ही नागपुर में था, और जहाँ कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, वहाँ रामटेक तक गया था। तो मेघदूत के बारे में कितने लोगों ने सुना, अगर जो इंग्लिश लिटरेचर वाले बैठे हों, उसकी मुकाबला विश्व में किसी भी रचना से नहीं किया जा सकता। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व करने वाले हम भारतीय बने। उसके लिए ही 24 साल पहले हमने महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके माध्यम से आज के युग में एक आम धारणा है कि जितने ये संस्थाएं हैं शिक्षा के अंदर, ये सब प्राइवेट हैं,
ये सब निजी लाभ के लिए एक ऐसी धारणा हमारे इंग्लिश मीडिया ने और व्यवस्था ने बना दी है कि प्राइवेट, और प्राइवेट शब्द इस देश में गाली की तरह है। मैं तो उसको गाली ही मानता हूँ, और उसको ये माना जाता है कि ये सब बुरे हैं। इस देश में वैश्य एजुकेशन सोसाइटी गांधी जी ने 1916 में मेरे रोहतक शहर में बनाई थी, 100 साल से ऊपर के लिए। डीएवी कॉलेज, जिसकी स्थापना आर्य समाज के प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय जी, महात्मा हंसराज ने शुरू की, उसको कितने दिन हो गए कोई बताएगा नहीं। डीएवी की आज 1000 से ज़्यादा संस्थाएं देश में हैं। और शहीद भगत सिंह, जिसके बारे में, जिनका कल हम शहीदी दिवस मनाएंगे, उन शहीद भगत सिंह को राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, शहादत के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका आज जन्मदिन भी है। आज कितना विशेष दिन है। आज ही डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार का जन्मदिन है, जिसको लोग अधिकांश नहीं जानते, जिनकी प्रेरणा से लोग, हजारों लोग, लगभग 2 लाख स्थानों पर आज देश के कार्य में लगे हुए हैं, और जिनके कारण आज देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री तक मिल गए हैं। वो डॉक्टर हेडगेवार उसके कारक थे। ये देश का सौभाग्य है कि स्वामी दयानंद से सीधे आर्य समाज की दीक्षा लेने वाले शहीद भगत सिंह के बाबा थे। शहीद भगत सिंह की प्रेरणा लाला लाजपत राय थे। साइमन कमीशन गो बैक, और उस लाठीचार्ज के खिलाफ लाजपत राय को गुस्सा आया था, और वो बंदूक बोने के लिए खेत में गए थे, एक बाल सुलभ चेष्टा, और उसका मैं वध करूंगा, उसके लिए कोशिश की। पर नैरेटिव बना दिया गया जैसे वो कोई लेफ्टिस्ट था और केवल इनकलाब जिंदाबादी था। कितना राष्ट्र प्रेमी था, कितना सत्यवादी था कि पार्लियामेंट पर बम कांड के बाद भी स्वयं को प्रस्तुत किया, और उसने कहा मेरे केवल कान खोलने के लिए ये किया था। पर उनके साथ कितने लोग, 2 नाम सब जानते हैं, राजगुरु, सुखदेव और शहीद। उनका एक चौथा साथी था, जिसको उसकी मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के अनुसार वहीं पर जिसका संस्कार किया गया, जहाँ उन तीनों का किया है। कितनों को मालूम है? नहीं मालूम। वो स्थान पाकिस्तान में चला गया था, कैसे उसको बार्टर करके वापस लिया गया फिरोजपुर में, ये नहीं मालूम, क्योंकि बताया नहीं गया। तो ये सब चीज़ें इनकी शिक्षा पद्धति से आउट कर दी थी, ये फिर से इसके अंदर आनी चाहिए, और वो आना प्रारंभ हो रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था, बाई चांस जो इंग्लिश मीडियम और जो मैकाले थे, उन्होंने इस देश के लिए ये कानून व्यवस्था बनाई। और मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूँ। 1977 से 80 तक मैं इमरजेंसी की जेल यात्रा के बाद, आने के बाद 5 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की। मैं साइंस का पीजी था। ये पढ़ने के लिए लॉ व्यवस्था है क्या? दुर्भाग्य कि आज भी हम उन्हीं इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सीवीसी और उन कानूनों में उलझे हुए हैं जो आज आउटडेटेड हो गए हैं, 250 साल पुराने हो गए हैं। हम अपनी नई रचनाएं नहीं कर पा रहे, और उसके कारण से कितने ही हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की बात करें, ये अल्टरनेट हो गए जो हमारे मुख्य थे। आयुर्वेद हमारा मुख्य था, वो आज अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया। कैसा बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव है कि हमें अपनी चीज़ें अल्टरनेट लग रही हैं। मुख्य चीज़ें कौन सी लग रही हैं? जो उन्होंने हमें दी, जिनको गिनती नहीं आती थी, जिनको 1 से 10 लिखने में गिनने बनाने लगाने पड़ते थे, 1 2 3, जिनका 10 महीने का साल था, जिनको ये नहीं मालूम था कि पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है, नक्षत्रों के बारे में बहुत दूर की बात, वो आज हमारे अभी तक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमें आर्यभट्ट के बारे में नहीं मालूम, ब्रह्मगुप्त के बारे में नहीं मालूम, वराह मिहिर के बारे में नहीं मालूम। जिस गैलीलियो ने सच बोलने की कोशिश की, उसको सजा दी गई थी कि पृथ्वी के ओर सूर्य घूमता है, इस मान्यता को तोड़ा था। परंतु ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों को, 200 लोगों का ये परिवार है, खुली मेंबरशिप है, डेमोक्रेटिक ढंग से हमारे संस्था में चुनाव होता है, सारी व्यवस्थाएं करके, और हमने 24 साल की यात्रा पूरी की है। 25वें साल में हम प्रवेश करेंगे। अमृतकाल के बाद जब हमारा 100वां साल आज़ादी का मिले, जब तक मेरी इच्छा ये, यदि जीवित रहा, तक मैं भी 75 का हो रहा हूँ, कि ये अल्टरनेट शब्द हटें। जिन चीज़ों को हमने मनुस्मृति को गाली देते हैं, बाकी स्मृतियों को, वो न्याय व्यवस्था के मुख्य आधार रहे हैं।
न्याय की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए? विधि और न्याय, अगर न्याय सबको मिल जाए तो विधि की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर न्याय नहीं मिलता। इसलिए जस्टिस वर्मा जी ने बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट दिए। मुझे उसमें SR मुंबई वाला जजमेंट, क्योंकि मैं थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूँ, और दूसरा उनकी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स की बजाय फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ड्यूटीज़ के ऊपर बातचीत की। क्यों इस देश में सारी लड़ाई अधिकारों की है, कर्तव्य को हमारे संविधान ने भी बहुत पीछे रख दिया। पूरे संविधान में कहीं भारत नज़र नहीं आता। ये तो मैं समझता हूँ अम्बेडकर जी की बड़ी कृपा थी, उसके साथ साथ कृपा थी सरदार पटेल जैसे लोगों की, जिन्होंने चुपचाप नंदलाल बोस के माध्यम से भारत के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय बना दिया। उसके अंदर वो सब महापुरुषों के चित्र इत्यादि साइडों में डाल के, खाली स्पेस के फिल इन ब्लैंक करके इसको भारत का संविधान बनाया। आज कम से वो संविधान अब पढ़ने को 2 साल से फिर दर्शन तो हो जाते हैं लोगों को। हमारे भी भटनागर जी के माध्यम से ओरिजिनल मंगाया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ चीज़ें शुरू की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दिवस शुरू किया, नहीं लोगों को मालूम ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता कोई एक व्यक्ति नहीं है, परंतु मुख्य उनका कंट्रीब्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। जहां मैं अभी नागपुर गया तो उस एयरपोर्ट का नाम था, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा मिला। परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका गौण नहीं हो सकती। भारत क्योंकि जातियों से आधारित देश है, जिनके फॉलोअर ज़्यादा हों तो उसकी नाम बड़ा कर देते हैं राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि जाति से उतने बड़ी जाति नहीं है संख्या की दृष्टि से, तो शायद उनका नाम पीछे चला है। पर ये सब चीज़ें चलेंगी। जलियांवाला कांड के शहीदों को याद करते हुए भारत के अंदर न्याय व्यवस्था सुधरे, भारत की हर व्यवस्था सुधरे, और हम भारत को विश्व की हर दृष्टि से, अभी हम कहीं 4था नंबर है, कहीं 5वां नंबर है, और किसी किसी पैमाने पर हमें हैप्पीनेस इंडेक्स में 125वां रख दिया। क्योंकि यदि हम उनके चश्मे से देखेंगे तो हीन भावना आएगी। हमने अपने चश्मे से अपने को देखना है, हमने सृष्टि को देखना है। जैसे हमारे दृष्टिकोण बनेंगे वैसी हमें सृष्टि नजर आएगी। तो इस अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए भारतीयता, भारत के ऊपर विश्वास और अपने ऊपर विश्वास करना हम लोग सब सीखें। तो जस्टिस J.S वर्मा जैसे लोगों की जो इच्छाएं थी, जो शायद उस समय के अनुकूल समय नहीं था, आज एक अनुकूल समय है। जो कुछ हम सोचते हैं उन सबको कार्यान्वयन कर सकते हैं और करना ही है, और कोई विकल्प नहीं है। इस 25 साल में भारत का भविष्य आपके मेरे हाथ में है। इस 25 साल में यदि हम जागरूक भारतीय नागरिक बनेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम अपने आप हो जाएगा। हम वसुधा पर रहने वाले। आज भी मैंने एक बच्चे से पूछा मैडम के सामने, वसुधा का अर्थ बता दूं, नहीं बता पाए। उसकी कमी नहीं है, हमारी कमी है, इस पीढ़ी की कमी जो आज 40 साल 45 साल 50 साल के हैं। हमने अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजा जिनकी जड़ें कट गई, और जड़ से कटने के बाद कोई पेड़ कितने दिन जीवित रहता, नहीं रह सकता। इसलिए आज सैपलिंग दिए हैं, जस्टिस साहब के घरों में जाएं। इनका इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ हाथ में सुप्रीम कोर्ट। मैं बहुत आदर सम्मान इस भारत के अंदर कुछ जो संस्थाएं हैं जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, उनमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्याय व्यवस्था है। उस न्याय व्यवस्था को भी उस जकड़न से निकालना है जिसमें 1,000 पेज की वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, 5,000 पेज की चार्जशीट फाइल होती है, और उसके लिए समय फिर पढ़ने पढ़ाने का नहीं मिलता। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिसके लिए सभी प्रयासरत हैं। पीछे रमन्ना साहब आए, इन्होंने भी बताया था, ललित साहब ने भी बताया था, और ये सब लोग भविष्य के चीफ जस्टिस हैं हमारे, या इस कर्णधार, इनके माध्यम से इस देश में ये परिवर्तन आए कि न्याय व्यवस्था में त्वरित न्याय हो, जल्दी न्याय मिले। और उसके लिए ये पुरानी वो कोर्ट हटानी पड़ेगी कि हजारों गुनहगार बच जाएं तो कोई बात नहीं, एक बेगुनाह को गुनहगार सिद्ध ना करो। इतना बड़ा डिफरेंस वो दे रखा है रेशो का, वो नहीं होना चाहिए। गुनहगार का मोटा मोटा पता चल जाता है 3 दिन में, 5 दिन। तो मीडिया ट्रायल कर करा के और उसका सत्यानाश होता है। ट्रायल फास्ट हो, न्यायपूर्ण हो, इसके लिए भारत की व्यवस्था नीचे से ऊपर तक, और भारतीय भाषाओं में जिसके लिए जोर दिया जा रहा है। इस देश के 2 दुर्भाग्य, पूजा पाठ हम करते हैं उसकी भाषा में नहीं आती, न्याय व्यवस्था उसकी भाषा आम लोगों को नहीं मालूम, तो कैसे देश चलेगा।
उसे पता ही नहीं लिटिगेंट को क्या हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से हमारे रजनीश जी जा रहे हैं हाई कोर्ट में, देख रहे हैं तमाशा। 3 बजे केस लगेगा, 4 बजे आके फिर अगले दिन के लिए, फिर अगले दिन के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए रोज की फीस लेने वाले ने जो वकील हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है व्यवस्था पे। और हमारे जो न्यायाधीश हैं जिनको पूरे महीने में उतने नहीं मिलते जितने उनको एक दिन की पेशी में मिलते हैं, तो इस व्यवस्था को भी कौन तोड़ेगा। डॉक्टर्स एक्सप्लॉइट करेंगे, बड़े बड़े वकील करेंगे, 1-1 दिन में 1-1 करोड़ की रिसीट वाले हैं। कोई सीलिंग उन पे नहीं लगनी चाहिए क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसद में कहा था 1/10 की रेशो हो, तो कोई रेशो फीस पे नहीं होनी चाहिए क्या? एक दिन में 3 से ज़्यादा अपीयरेंस ना हो, बड़े वकीलों की तो अपने आप सीधे हो जाएंगे, नीचे तक वालों को केस मिलेंगे और जल्दी फैसले होंगे। तो मेरे छोटे सुझाव हैं, छोटे मोटे, अपने एक्सपीरियंस से हैं। कोई शब्द, मेरी भावना गलत नहीं है, कोई शब्द अच्छा ना भी लगा तो दोनों माननीय न्यायाधीशों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे आने वाले इस क्षेत्र में जो अच्छे होनहार बालक हैं, 80%, 90% नंबर लेके आते हैं, कंपटीशन से आते हैं, NCLT क्लेट का एग्ज़ाम पास करके आते हैं, उनका भी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ माननीय दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी हैं, कुछ चीज़ें उनकी तरफ भी झांक लें। क्लेट सारे देश में होगा, दिल्ली वालों का अलग होगा, बेंगलोर का अलग होगा। हम सबको जजमेंट देते हैं, अपने अधीन जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा वहाँ भी झांक लें। तो मेरा ही यदि PA अगर नोट ले रहा है, बराबर में बात कर रहा है, तो न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर तक थोड़ा थोड़ा उधर भी झांकेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश में एक करप्शन फ्री, एक अच्छी आइडिया, यूटोपियन व्यवस्था बनाने में हम सब लोग सहायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। JS वर्मा इस उनकी सुपुत्रियाँ उपस्थित है, अभी बताया कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2 तारीख तक ये चलेंगे। आना सतीश जी ने 2 को था, परंतु ये देखो सौभाग्य कि वो आज आए हैं, और जिनको आज आना था किसी कारण से नहीं आ पाए, उनकी व्यस्तता को हम समझते हैं। उनका भी स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहें और आने वाली पीढ़ी का निर्माण करने में हम सब मिलकर सहयोगी बने। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके यही उच्च विचार हमें सदा प्रगति की ओर प्रेरित करते हैं। In today's event, our special guests, Honorable Mr. Justice A.M. Khanwilkar, former Judge, Supreme Court of India, and Honorable Mr. Justice Rituraj Avasthi, Chairperson, Law Commission of India, could not join us owing to some exigency. However, they have showered their blessings over all of us this evening. It is our privilege to have among us our guest of honor, Honorable Mr. Justice Satish Chandra Sharma, Chief Justice, Delhi High Court. Lordships has been a gold medalist since his graduation days. He was a designated senior advocate at the Madhya Pradesh High Court, setting record of being one of the youngest senior advocate. He was elevated as the additional judge of the High Court of Madhya Pradesh in the year 2008 and was later appointed as a permanent judge in the year 2010. Lordship is known for his contribution to various universities and is associated with national law universities. He is also on the advisory board of National Law Institute University, Bhopal, and India International University of Legal Education and Research, Goa, and has published numerous research articles and papers. Lordship took oath of office of the Chief Justice, Delhi High Court in the year 2022. Prior to this, he was also elevated as the Chief Justice of Telangana High Court in October 2021 and Karnataka High Court in January 2021. We welcome you, sir. Honorable Mr. Justice Jiten Maheshwari ji, Dr. Nand Kishore Ji Garg, Founder and Chief Advisor, MAIMS, Mr. Vineet Lohia ji,
Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra ji, and my dear sister Subhra ji. We hail from the same city, Justice Maheshwari ji, Shubhra ji, Honorable Justice J.S Verma ji. We are from Jabalpur. Mr. Anis Gupta, member of Indian Revenue Services. In fact, I was not the speaker today. I was supposed to come on second. So there's no written speech. I was impressed by the kind words spoken by Nand Kishore Garg ji. And I'm thankful to him for reminding me that cases are not being heard. Sir, believe me, we are working very hard, very hard. But the problem is, as you rightly pointed out, that some of the lawyers, they take fees and then they get the matter adjourned. We are trying to control that issue, but at the end of the day, we have to accommodate people. But I can speak about myself. I reach court every day at 9 a.m. and I'm there till 8:30. When I was in, I'll see. These all clapping should be for Justice J.S. Verma and Justice G.P. Singh, not for me, because they are my role models. When I was in Bangalore, I came at about 9 p.m. in the evening. So my wife was there. She said, she called my PSO, the man who carries a gun and who's always with you. कल से आप ऐसा करिएगा, साहब का बिस्तर भी साथ में लेते जाइएगा. So I promise you, sir, that we'll work very hard, and we'll try to reduce the backlog. There's a genuine problem of the language in our legal profession, but we are working very hard on it. In Delhi High Court, we have launched a software program by which we are translating all judgments into Hindi. Under the chairmanship of Honorable Justice D.Y. Chanchud ji, a program has been launched and there is a software called SOVAS. And the judgments are being translated into all regional languages, so that students coming from South, coming from Northeast, coming from other parts of the country are able to understand the judgments, and they are able to participate in exams like CLET, which I have been told is only in English. There's a petition also before Delhi High Court for holding CLAT in other languages, so I'll not comment upon that issue. Shri Garg Sahab has pointed out that National Law University, Delhi is not part of CLAT. In fact, when I attended the meeting for the first time, I requested the Vice Chancellor that why don't you bring National University Delhi also under CLAT. Sir, there's a major problem in that university. Funding is done by Delhi government, and the university generates a lot of money by holding CLAT. And that money is catering to the need of professors, teachers, and therefore right now they were reluctant to be part of CLAT. But the process is on, and I'm trying my level best to include Delhi National Law University Delhi also as a member of the consortium. I'm very happy to see all young people who have come from different parts of the country. I wish all of you a good luck. And I'll once again remind you that Honorable J.S. Verma, Justice J.S. Verma was I don't have words to praise him. That famous Vishaka judgment,
which is meant for women, harassment of women at workplace, is his judgment. And when he was unwell, he was admitted in Vedanta. Till his last breath, he worked for the country for amending the IPC and the Code of Criminal Procedure. He was a great man. When I became a judge, he was a judge in Madhya Pradesh High Court, and a very strict judge. You will not believe I could not gather the courage to appear before him. Such a strict judge, straightforward judge, wonderful judge. Because if you wanted to appear before him, he wanted you to be ready on each and every aspect. But after about a year, he went as a Chief Justice. So once again, best of luck to all of you. Thanks a lot. Thank you for inviting me. Jai Hind. Thank you, Lordship, for making us familiar with the true intention and the efforts of the judiciary in dealing with the humongous pendency. Indeed, Lordship, Justice Verma was a role model and continues to be so for each one of us present here. Moving further with the program, it is an extreme honor for us to be graced by the presence of Honorable Mr. Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Judge, Supreme Court of India. Lordship is known for his humble nature and diligent attitude. During his early years, Lordship has practiced in civil, criminal, constitutional service and tax matters. He was also elected member of the Madhya Pradesh State Bar Council. He was elevated as the judge of the Supreme Court of India in August 2021. Prior to this, Lordship was appointed as the additional judge of the High Court of Madhya Pradesh in the year 2005 and later in the year 2008 was appointed as the permanent judge. Since then, he has been part of various committees pertaining to the better administration of the Madhya Pradesh High Court and continued his good offices till October 2019. Sir, on 7th of October 2019, became the first Chief Justice of the newly established Andhra Pradesh High Court. Later, he was transferred as the Chief Justice of the High Court of Sikkim on January 6th of 2021. At this juncture, it is apposite to share an anecdote of his humble and compassionate heart. During Lordship's fabled speech from the Andhra Pradesh High Court, where he got emotional and gave all the credit to his counterparts, colleagues, and staff, with utmost humility, stated that I have done nothing. In fact, the credit has come to me by those who deserve credit. I humbly request your Lordship to kindly apprise us with the words of your wisdom. गुड इवनिंग। आज विक्रम संवत 2020 की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Today my brother Justice Satish Chandra Sharma, Chief Justice, High Court of Delhi, is present. Dr. Nand Kishore Garg, founder of the Chief Advisor of the MAIMS, Sri Vivek Kumar, Dr. Rajni, Subraji, administrative officers, advocates, board members, dear students. I remember 2-3 lines to why this profession is and what is the theme behind. Poet said, दर्द ही दर्द भर गया दिल में, इतना हिस्सास करा दिया गम ने, जब भी किसी आंख से गिरा आंसू अपनी आंख में ले लिया हमने. This is the theme behind. Initially I was thinking
because I should prepare and I should say something for this client counseling competition of ADR. I decided I will not go by that completely. I will have to discuss some issues which may be relevant for this ADR client counseling competition, which may be new issues which I will discuss with all of you. Friends, it's an honor to me to be here among all the students or the future of this generation in legal field. So far as Justice Verma is concerned, you must remember who is Justice Verma. I know my senior was made judge by Justice Verma. And my senior was also the Chief Justice of India. So you can understand who is Justice Verma and why this lecture in the memory of Justice Verma, and that too on a new point, that is of the ADR, alternate dispute resolution. So Justice Verma is a jurist. Justice Verma is a human being. Justice Verma wants to do something for the legal fraternity, and he did during his all life. After retirement, he has not done any arbitration or anything. What he did is, he did how the law of India can be developed, how we can interact with the newcomers and the students, thereby they may come up and our legal system would ascertain the Indian judicial system. So this was the overall functioning of Justice Verma apart from his judicial career. He was a distinguished judge. I have an opportunity to appear before him. I know in my initial days of practice in 1986, I was practicing in Gwalior. Justice Verma came. Gwalior, he was the acting Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh. It was the 2nd January when the court was started, 1986. When I saw his face, we were very much feared. Tall, very straightforward, not smiling to anyone, rigid. Anyhow, first day, I saw my senior to appear in number of the cases. Then thereafter, from the next day, he has taken for half of the day those cases, then later criminal appeals. And we people were going and sitting there only for the purpose that how Justice Verma administered the court proceeding. This was the initial thought process. New advocate started practice in 1985, you can understand. When I was sitting in the court in an after lunch session, I found all the advocates left the court due to fear of Justice Verma, and 2 or 3 new boys were sitting and they were looking forward the face of Justice Verma, and one government advocate from the prosecution side. He saw 3 boys sitting. Out of them, who can speak in English before him? So he asked, yes, who can argue the case? We have no case, sir. No, yes, please, you can. Yes. You see this case. I will take up after half an hour. Before Justice Verma,
having a criminal case of murder, life imprisonment. It was a very wavering situation in our mind, what we can do. Anyhow, I come out, I asked to my senior, sir, this is, no, you go, please see, and you argue before him. You see what is the prosecution case, what is the star witnesses, you tell him, he knows the law, he will do justice. You cannot do more than that before him. I could have guessed something, what I have to do. And accordingly, I started. Friends, you would imagine, all new advocates, who may be the advocates, are here. I read the prosecution case and I said, these are two witnesses. The allegation is corroborated by medical evidence like this. He asked a question. What is the date of incidence when FIR reported, made? So I found it is a delay of 1 day. Sir, it is on. What is the explanation? I could not explain. I am fairly telling you, maybe a judge of Supreme Court today, but on that day I was aware what I was. Then he said, you see the eyewitnesses, 2 eyewitnesses? Yes, sir. Those eyewitnesses after 4 days? Yes, sir. This is after 4 days, 161 statement. Then, what happened? How they became eyewitness? Sir, I have not seen that. Anyway, after seeing everything and looking to the finding, he acquitted the accused. I could not understand what happened in the case. But after he dictated the judgment in the open court, and I taken the copy and then I study, and then again I started reading that file, that paper book. Then I could find out how and what manner we have to prepare the cases and argue the case. So this was a time of Justice Verma. But that first step of Justice Verma brought me up to this extent. I can say this much for Justice Verma. This is the real story. This is no story from any book and from anywhere. Now I'm coming on the today's topic, ADR. Why ADR was? Abraham Lincoln said, discourage litigation, persuade your neighbors to compromise whenever you can, point out to them how the nominal winner is often the real loser in fees, expenses, waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be business enough. This is the theme behind ADR. This ADR system is not of today's system. This ADR system, if you can remember, from ancient time, Mr. Garg was reminding of Agrasen. Those were the Vanshas of that time in Dwapar period. Kans, they were kept in the prison. Now, the Mahabharata, Battle of Mahabharata was to fought. At that time, Krishna played a role of mediator. And when it was, everything was settled, no, now
the Mahabharat battle would be there, it would be fought by Kaurava and Pandavas. Krishna persuaded the Pandavas first, because he was aware that if he will persuade the Pandavas, then they may accept some proposals. But Pandavas were agree, and they have agreed if the 5 villages would be given to us, then we have no problem. Now the question was whether those 5 villages would be given by the Kauravas to them or not. Now in this context, to avoid this battle, Krishna visited to Kauravas and made this proposal. Why this battle was fought? At that time when a mediator visited, the rule was whenever there is a mediator, there should not be any attempt to force and coercion or to assault. But when it was not acceptable, they tried to make that attempt, and the Krishna defended and come back, and that was the outcome of the battle of Mahabharata. And you can understand this cause of Mahabharata and outcome what was. So now the ADR, alternative dispute resolution. Why? This alternative dispute resolution is not from now time, it is from old time. Today is the day on which Vikramaditya का राज्य सिंहासन आज हुआ. And Vikramaditya was known for his justice. And that justice was not all alone by law. In fact, he did real justice. Real justice means both are satisfied. We are pronouncing the judgments and orders. Is it a justice? We do it in accordance with law. One has to accept it. But that was a justice. And that justice was based on, and you would have listened, I remember one story, Throne of Vikram. In that story, this was a throne, Vikramaditya sitting on that throne and used to dispense the justice. And that was with 32 angels. And those angels answer everything for dispensation of justice. And one of the elements of that is how you can mediate the issues. The issue has come regarding Vasudhaiva Kutumbakam. What is this Vasudhaiva Kutumbakam? If we see in the old days, when we are in the joint families, there was class. Clans were there. The peoples were appointed to decide, what is this? This is a mediation. This is nothing. So this theory of this mediation is nothing new, but it is quite old. How and what manner in these days it ought to be implemented. In these days, I can say that Mr. Garg said it is alternative. But in the 21st century, now it is being accepted as an appropriate, not alternative. It is being accepted as an appropriate resolution forum. And why appropriate? I can put one example. One 56 years old case was there in the Supreme Court. It was resolved by way of a mediation when Justice U.U. Lalit, by the Chief Justice of India, and he participated in that mediation proceeding. Finally, the peoples who were fighting for the rights, their shares, could get settled that dispute. And thereby, the final outcome of it is
they have their rights, they have their satisfaction, they maintain their relations, and that too by way of meeting of mind. So this mediation is appropriate in these days, but it is required to be mediated by the proper person. So therefore, today's inaugural function for client counseling for ADR, mediation, is very much material. And this is an art. And how to develop an art, what is to be in that art, this is one of the situations which you will learn during this conference. Now the another aspect is, in these days, what are the developments? I put in a different way. I think you would be aware, you people have come here, you would be aware that the codified laws are in India is there. But the Singapore Convention for mediation is in vogue in these days. On the basis of the same, the mediation bill 2021 is in progress. It is there. That Singapore Convention, we all are part of it. The purpose thereof is all the commercial and other litigations must be put into mediation, thereby, first of all, it ought to be settled. But one dichotomy is there. In Singapore Convention, we see the Singapore Convention as well as of Indian laws, one dichotomy, which has to be looked into, and you have to discuss. That dichotomy is, in Singapore, there is a procedure made by them, but here it is completely a procedure prescribed as per that bill or arbitration or by amendment in the CPC or otherwise. So this is one of the aspects that is required to be dialogue, that is required to be discussed during this time while learning the client counseling. So these are certain issues which required to be seen by all of you. Now, I remember one thing when I was the Chief Justice of the Sikkim. I will put an example. There are two places for visitors or tourists. It is heaven. Those are Lachen and Lachun. It is in the North Sikkim. Why I am reminding both these places? In both these places, there is no administrative officer. If they post it, they have no role. There is no judicial work. They have no role. The role is of the local elected or nominated persons, and they discharge all functions that includes administrative and judicial. And that is by way of mediation. So this is one of the example. It was in front of me. I have dialogued with all those persons. Though they were in their language, but some of the persons with us were there, they were asking of Nepali. So we can understand. वो हिंदी कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, तो they have explained how and what manner we get everything from the government and how and what manner we distribute to everyone, how we dispense the education, how we dispense with all food articles, how we, if any problem arises, dispute arises, how we go and how we resolve. Then we find in those persons there is an element of mediator. So that is one of the example, live example, which I have seen personally from my own eyes. Now in these days, you know, the online mediation is started. And that is, I think, ये हमारे COVID-19 की देन है. After COVID-19, how the court proceedings have been started virtually,
I know. I was the person who first started the hearing in Andhra as Chief Justice on 25th of March. I know, remember. So now this is one of the aspect. Artificial intelligence, Justice Sharma was talking. They formulated one application that is being developed. Why artificial intelligence? For this translation. This is one of the relevant issues. As per the government policy and the law, or as per the constitutional spirit, as well as the judgments, mother tongue should not be compromised. A child is born wherever. He develops, he talks in that mother tongue. He thinks in that mother tongue, but he explains in other languages. So that should not be compromised. And I think this is the recent policy of 2021 of the Indian government, which is issued. And that is the kith and kin. Why it is necessary for the purpose of mediation and artificial intelligence is required. This artificial intelligence give the point to think in their own way, in their own language, and to find out a solution as per their wisdom. So this artificial intelligence in these days, I made it a point, and we are making all attempt that the people who are unaware, who are not in a position sometime to go through the judgments of the Supreme Court or otherwise in other languages, they can do it. So this is one of the cause of artificial intelligence. And in the words of Mahatma Gandhi, I will conclude something. My joy was boundless. I had learned the true practice of law. I had learned to find out the better side of human nature and entire man's hearts. I realized that the true function of a lawyer was to unite parties riven asunder. The lesson was so indelibly burned into me that the last part of my time during 20 years of my practice as a lawyer was occupied in bringing about private compromises of hundreds of cases. I lost nothing thereby, not even money, certainly not my soul. Not my soul. Friend, you can understand this mediation, and if you practicing in this side, in profession also, this bit not lost your soul, what you can do is, everyone would be in a win-win situation. So you have to thought of it, and it should be dialogued in a proper perspective to find out and to develop your techniques for the purpose of client counseling for mediation. Thank you very much for calling me. Thank you. Thank you so much, sir. We are extremely grateful for the time and effort you took to share your real-life experiences and learnings in front of our August gathering. We have no doubt that your legacy will continue to inspire all the young minds like us. I now welcome our Shri Vineet Kumar Lohia ji, Chairman MAIMS amongst us. आप लोहिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक, सुप्रसिद्ध उद्योगपति होने के साथ साथ एक समाज सेवी और भारत की सबसे बड़ी आदिवासी छात्रों की स्कूल चेन एकल विद्यालय के सदस्य भी हैं. I request you to kindly extend a vote of thanks to our gathering today, sir.
मंचासीन एवं सभागार में उपस्थित समस्त विद्वानों एवं महानुभावों को सर्वप्रथम विक्रम संवत 2080 के शुभारंभ एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेम्स के विधि विभाग द्वारा आयोजित तृतीय जस्टिस J.S वर्मा मेमोरियल नेशनल ADRCC कंपटीशन में अपना बहुमूल्य समय देकर उपस्थित हुए माननीय न्यायविदों और महाविभूतियों के आगमन और आशीर्वचन तथा न्याय के दिशा निर्धारक तत्वों के निर्वचन से ये सदन स्वयं को गौरवान्वित, महिमा मंडित एवं ऊर्जावान होने का तथा अमृतपान जैसा सुखद अनुभव कर रहा है। इस हेतु मैं माननीय श्री J.S वर्मा जी के प्रति श्रद्धा नमन होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र शर्मा जी एवं हमारे मेट्स के फाउंडर चेयरमैन व हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी व मेम्स के डायरेक्टर मेट्स डॉक्टर रजनी मल्होत्रा ढींगरा जी, हमारे सेक्रेटरी T.R. गर्ग जी के प्रति शुद्ध अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं व उनके स्वस्थ जीवन की कामना प्रभु से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। With these words, I request you all to take a moment to pay respect to our motherland and kindly rise for the national anthem. Thank you everyone for joining us this evening. Before our distinguished guests leave, I request